तो आप सभी का स्वागत है कंट्रोल के पार्ट नंबर 26 के अंदर। तो यार 25 भी हो सकता है, 26 मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर। तो यार एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। इन लोग बता नहीं सकते थे कि अब ये हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे ब्लॉक की। मैं इतने आधे घंटे से दिमाग ख़राब कर रहा हूँ मैं अपना। तो बेसिकली एक बार आपको सिर्फ चूज़ करना है, आपको इस ब्लॉक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पहली बार ऐसा है पूरे गेम के अंदर कि एक एडिशनल ब्लॉक देखा मैंने जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम राइट साइड चलते हैं। पूरा टाइम वेस्ट। बड़ी बात नहीं अगर ये ब्लॉक से मेरे सपने में भी आए तो। ओके सो वेपन वालों में थोड़ा करना है। दूसरा वाला ये रहा। पता है क्या, छोड़ो। एक बार चेक कर लेते हैं बस है कि नहीं। मैं ध्यान लगाऊंगा ही नहीं कि एक्स्ट्रा है तो है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो रहा। एटलीस्ट इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। मुझे लग रहा है वो बग था कोई गेम में जिसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा मिला होता ब्लॉक जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये यहाँ पे ट्रैप्स वगैरह, इसका मतलब यहाँ पे लड़ाई होगी। इसकी कहाँ रिक्वायरमेंट है? ऐसे रुको। अब थोड़ा लग रहा है कि यहाँ अब हम बढ़िया खेल रहे हैं। मेक एंड मेक। ये क्यों मिला? ओके। हम्म, ये रहा दूसरा। एटलीस्ट हमारे पास अब एक गोल है जिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बड़ा सेटिस्फाइंग है। हम्म,
ओ एक कंट्रोल पॉइंट। यहाँ से यहाँ। ओह एक और कंट्रोल पॉइंट। ओके Every day plus 86. There's been a change. Hercules and Mabel. I mean, it numbers 3 and 11. Attacked my staff today. Ooh, 6. So charge and search. Okay. मुझे नहीं पता था इसके बाद का भी एक टीआर है कोई। टू पियर्स रिक्वायरमेंट नहीं आती। ये आया ना अभी। ये क्या है?
ओ भाई कितने हैं? और है क्या? एक और है। Hatching, like the one I used to get in here. भाई साहब थोड़े से मॉड्स क्लीन करने पड़ेंगे। ओके अब यहाँ पे चलते हैं। Is this the lock/key the board told me about? ओके तो ये फॉर्मर वाली चल रही है सारी चीजें। हमारे पास भी कलेक्टिबल्स में है क्या क्या? ठीक है लॉक 6 3 4 5 बचे हमारे अभी। क्या करना है? तोड़ना है इनको? सिर्फ 3 बचे हैं। Just doing my job. First इसे ना one down. Director Faden's got this covered. हमारी बैंड बज गई इधर। और सही में आगे करना क्या है? एक हो जाए तो बाकी 3 बहुत आसान है। पहले में गड़बड़ होती है हमेशा। लोग हैं यहाँ पे। We've got this area covered, Director. फाउंडेशन रेंजर। वो एमिली है। Jesse, hey! Emily, how did she get down here? What are you doing down here, Emily? What do you mean? You called me down, remember? I'm pretty sure I didn't. No, that's right. You didn't. But then, I remember you needing me to come here. I mean, you even told me how to get in. Let's just chalk it up to synchronicity so we can get to work. She takes everything in stride. The board called me down here to deal with the situation. The astral plane is... Colliding with our world, I know. Isn't it fascinating? I never even considered that the astral plane could be a physical volume expanding beyond its dimensional container. The bleed is localized to this area, but its growth rate seems steady. Given time, it will consume the entire Bureau, and possibly beyond. That's what I'm here to stop. The board told me to fix the nail over there by dismantling 4 locks in the astral plane. Funny, I think it's put itself back together a bit. So that could be due to the law of inverse exchange. For every associated component you remove, this nail reconstructs. Or possibly some variation of anti-sympathy. Don't worry, I'll look into it. Did you notice all the Bureau infrastructure? It looks like there was a research team stationed down here at some point. Do you think Darling knew about this? I put money on it. That reminds me, have you seen Marshall? She contacted me over the hotline, but then I saw her walking around. I haven't seen her.
The hotline only connects to extraplanar entities. Or dead people. But Marshall's proved time and time again that she's a survivor. That's exactly what I thought. Anyway, I've been looking into the minerals growing down here. Have you noticed how they insist on maintaining a certain form? Maybe some sort of a state memory, or they consciously prefer a certain shape? I think we're on a clock here, Emily. I need to stop the astral bleeding before it brings the oldest house down. See what you can find out from the nail in the meantime. And send out some rangers to look for Marshall. She may be in trouble. Will do, Jesse. If you see anything interesting, remember to take detailed notes. The Rangers have tapped into an old radio network they found around the Foundation. So if you need backup, just call them at one of the stations. How did the Hiss get into the Foundation? Same way we did, I imagine. But you need to remember that the Hiss are the embodiment of persistence. Their nature seems to be one of force, to find every possible vulnerability and exploit it. Their only goal is consumption. I'm sure there's plenty of goodies for them down here. The nail, for instance. If the Hiss could corrupt the nail, I'm sure they would have by now. It must not interest them in its broken state. They could be distracted by the numerous unknown paranatural materials I'm sure are lying around. These are the roots of the oldest house. The Hiss will find plenty of ways to make trouble. They're pretty good at that. So you've never heard of the Foundation, huh? I've never even seen the name referenced. Clearly it's highly classified, but for what reason? The problem with these kinds of closed-off hidden areas is that they were likely sealed for good reason. But now no one is left to tell us what that reason was. Any guesses why the Bureau would hide something like this? I only know what I've observed. This place is spatially rigid, which means it doesn't shift like the rest of the oldest house. And before you ask why that is, I have to admit that I'm clueless. There's some signal interfering with my equipment, making it hard to get a clear reading. It's being emitted from the floor. Maybe I should have brought a jackhammer. The astral plane is already taking chunks out of this place, Emily. Let's not add to it. So let me get this straight. The astral plane is bleeding into the Foundation. Correct. And that's happening because the nail is damaged. I'd say it's a bit more than damaged, but yes, that is my understanding. So what's the connection between the nail and the astral plane? It's a good question. See, I always pictured objects of power as strings between our plane and the astral. If the nail has a similar relationship, then maybe it's more accurate to think of it like plumbing. Now that the nail is busted, sewage is gushing everywhere. Not the prettiest metaphor. I should get back out there. Agreed. The astral bleed won't stop itself. ओके अब यहाँ पे अब कैसे जाना है डीप कैवर्न सो केव ब्लीड हमने कर लिया तो यहाँ का सिंपल सा रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है हमने कैनियन रिम कर लिया शायद से फाइनली मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि करना क्या है एक बार यहाँ गिर के देखते हैं नहीं एक सेकेंड ओके हमें यहाँ से उधर जाना है यहाँ का जाने के लिए शायद से हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी
हमें शायद से दूसरी जगह से जाना चाहिए। हम वैसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस एरिया को। पहले वापस चलते हैं। यहाँ से पहले चलते हैं फास्ट ट्रैवल करके केव सिस्टम में। मेरे ख्याल से यहाँ से हमें हो जाएगा जो हमारा काम है। हम्म, यहाँ तक कैसे जाए? ऑलमोस्ट हो गया। कोई एक फुट होल्ड मिल जाए, काम हो जाएगा। मे बी यहाँ। नहीं, शायद दूसरे साइड से हमें ज़्यादा अच्छे से एक्सेस मिल पाए। भाई मैं बस इतना ही डर लग रहा है मेरे को कि भाई साहब फिर से वापस गोल चक्कर शुरू ना हो जाए हमारा, जो हमारे पहले साथ हुआ, पहले हुआ था। ठीक है, अब ये क्या है? ओके, अब थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर। नहीं, ये तरीका नहीं है। तो मे बी
शायद से यहीं से ही रास्ता मिले। ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं, क्वेश्चन वो है। यहाँ क्या है? इस साइड से कोशिश करते, क्या पता इस साइड से हमें एक्सेस मिल पाए। जाना तो इधर से ही है और कोई रास्ता है नहीं, या फिर रिसर्च साइड गामा के थ्रू एक्सेस मिल सकता है। देखा जाए, मैं सबसे पहले यही कहा गया था रिसर्च साइड गामा जाना है। अबे यार, मतलब पूरा गलत जा रही थी जैसे। जल्दी से रिसर्च साइड गामा चलते हैं। भाई इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग एरिया है ये कि हम कुछ कर भी नहीं सकते चाह के भी। और सही से ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर भी नहीं रखा तो यार। एक बार एक्सेस मिल जाए उस एस्ट्रल प्लेन का जहाँ पे हमें रिचुअल कंडक्ट करना है, फिर तो काम काफी आसान हो जाएगा। यहाँ से ये था रास्ता। हाँ, सही जगह जा रहे हैं। So I can't let the hiss take the nail. वो फाइनली कुछ प्रोग्रेस हो रही है। I snuck into the Foundation through a back door, I know. Had to get ahead of the hiss. Just a matter of bypassing the ritual protections. Luckily, the board's as distracted as the rest of the Bureau. I had to put on a brave face up there. But the situation is the worst I've ever seen. We're getting back on our feet, but we've already lost so much. Trench is dead. Darling is somewhere. I'm the only one left. But I still have a job to do. Keep the hiss back. There's not enough HRAs to spare, so I'll have to make do with what I've got. Frankly, I don't even know what will happen if the hiss take the nail. Trench made it sound like it'd be the end of the world. He was never one to exaggerate. Well, orders are orders, even if they come from a dead man. Not a problem. I know how to handle them. हम सही जा रहे थे।
जाना तो इधर से ही है। भाई कितने हैं? और साथ में ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। शायद से हो गया। ओ नहीं नहीं नहीं, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। फाइनली कुछ प्रोग्रेस हुई। हो, तसल्ली मिली अब भाई दिल को। एक सेकेंड, नहीं, हम कहाँ पर हैं? यहाँ कैसे जाएंगे? मे बी यहाँ से। देख के तो यही लग रहा, वहां तक हम नहीं जा पाएंगे। उप्स। Director Faden here. I need a ranger dispatched to my position. ओके, It's an honor, Director. ओ ये कहाँ से निकला? उप्स। भाई साहब, ओके, हो जाएगा। पता है क्या, अब आगे आगे का अगली वीडियो में करेंगे। वन, क्या मैं बोलने वाला था, 1 रिचुअल पर वीडियो। ठीक है, तब तक के लेते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ मैंने तुम्हें बता तो रही हूँ अगली हर वीडियो के अंदर क्या एंड इसके बाद क्या गेम्स वगैरह होंगे, उनको भी जरूर चेकआउट करते रहना। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।